हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस ब्रीफिंग से मुतालिक मज़ीद जान लेते हैं जहांज़ेब अली से। जी जहांज़ेब। जी देखिए, नायब तर्जुमान है अमरीकी महकमा ख़ारजा के वेदांत पटेल, उनसे अमरीकी कांग्रेस में जो पाकिस्तान के हवाले से करारदाद मंजूर हुई है उस पर सवालात हुए और उनसे ये भी सवाल हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की जानिब से बानी PTI की हिरासत को गैर कानूनी करार दिया गया है। इस पर अमरीकी महकमा ख़ारजा क्या कहेगा? तो इस पर वेदांत पटेल ने कहा कि बानी PTI पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और वही उस पर बेहतर तौर पर बात कर सकते हैं। वेदांत पटेल ने यह भी कहा कि हम ज़ेरे इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। हमारे जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलग शाख है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे आला हुकाम जो हैं, जिनमें वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो है, उन्होंने मुसलसल जो है निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपने आइन और बैन-अक़वामी कवानीन के मुताबिक अपने अवाम के हकूक़ का एहतराम करे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का भी जो है वो एहतराम करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी और लोगों के जमा होने को भी पुरअमन तौर पर जमा होने का भी हक हासिल होना चाहिए। उन्होंने कहा, उनसे मैंने ये भी पूछा कि अमरीकी हुकूमत भी इससे पहले पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए थे उनकी धांधली पर तशवीश का इजहार कर चुकी है और तहकीकात का मुतालबा किया था। क्या आज भी अमरीका अपने उस बयानी पर कायम है? तो वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात की धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ उठाते रहेंगे और पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला आज भी अमरीका की तवज्जो का मरकज है। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। अमरीका कहीं भी पड़ोसी ममालिक के दरमियान बातचीत होती है उसकी हौसला अफजाई करेगा। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब। Standard practice, we're not going to speak to pending congressional legislation. I will also note that in the United States of America, in our democratic system, Congress is a separate but co-equal branch of government. Let me just say broadly that when it comes to Pakistan, our most senior officials, whether it be Secretary Blinken, Assistant Secretary Liu, Ambassador Bloom, we have consistently and privately and publicly urged Pakistan to respect the rights of its people in line with its constitution and international commitments. And we urge the government of Pakistan to respect human rights and fundamental freedoms, including the freedom of expression, freedom of association, peaceful assembly, and the freedom of religion. Regarding Pakistan, but please correct me if I'm wrong, State Department also raised same questions regarding the credibility of Pakistani elections held in Feb this year and asking for the investigation of reports on massive rigging in those elections. You still asking those questions from the Pakistani government? This is something that we have continued to raise with our partners in Pakistan. Yes, that continues to be an area of focus of ours. So the Department of Homeland Security has identified over 400 immigrants from Central Asia and other regions as subjects of concern due to their entry into the U.S. through an ISIS-linked human smuggling network. What measures are being taken to mitigate this threat and ensure national security? So we're aware of this report, and this is something that my colleagues at the Department of Homeland Security can speak to in more detail. Let me just say, though, that we work very closely with international counterparts, including our partners in Central Asia, on issues like counterterrorism partnerships, exchange information on potential threats, and as well as improving screening capabilities. So would you say something about the multiple bombings in Nigeria, like more than 50 people dead, more than 100 are injured? So we condemn this horrific attack that took place in Borno on June 29th. These attacks show a disregard of human life and a reminder of the ongoing threat posed by terrorism in the region. We offer our condolences to the families of those killed and wish a full recovery to those who were injured. We would hope that any country on the face of the planet condemns terrorism anywhere, but ultimately this is between India and Pakistan. Broadly, of course, we welcome any countries making more positive relations with their neighbors, but as it relates to this specifically, I just don't have anything to offer. I let the United Nations offer any clarity on the comments that they've provided, and in the case of Mr. Khan, you've heard us say this before, this is an internal matter for Pakistan. I don't have any assessment to offer from here.